Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding beta blockers, medicine, that is atenolol, esmolol, metoprolol, sotalol and timolol. These are the beta blockers, and we will discuss regarding the beta blockers about the treatment procedure of beta blocker. Beta blocker always treat hypertension, stable angina, arrhythmias, heart failures, glaucoma and tremors. They are the some diseases in which we always use beta blockers. So beta blocker has important role in the treatment of this condition. Next we will discuss regarding how it works. The working process of beta blockers. Beta blockers block beta receptor site, so norepinephrine and the epinephrine cannot bind to receptor site and elicit the sympathetic nervous system. ठीक है, ये जो रिसेप्टर साइट को ब्लॉक करता है, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्शन वो ब्लॉक होता है. ठीक है. देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. दैट विल कॉज bradycardia, heart block, second and third degree, exacerbate heart failure, worsen asthma to COPD, hypotension और orthostatic hypotension. ये सब साइड इफेक्ट बीटा ब्लॉकर यूज करने से ये जो साइड इफेक्ट दिखाई देता है. ब्राडिकार्डिया जैसे कि हार्ट रेट कम हो जाना, इस तरह सिम्टम्स. रोल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, क्या करना है आपको? मॉनिटरिंग ईसीजी मॉनिटर करना है, हार्ट रेट, बीपी, साइन ऑफ हार्ट फेलियर जैसे कि जुगुलर वेन डिप्रेशन, वेट गेन हो गया, स्वेलिंग, डिस्निया एंड मोस्ट एफर ऑफ कैन मार्क्स हाइपोग्लिसेमिया एंड नॉट टैकीकार्डिया. These are the condition, these are the role of the nursing officer you should always follow, and this is the condition how will you manage. If you have the knowledge, then you can manage this situation. Okay, thank you for watching. Have a good day.